हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंपल फार्मा बेसिक्स। दिस इज आरती। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं बहुत सारे फार्मा में जो करियर अपॉर्चुनिटीज है उसको लेकर के बहुत सारे वीडियोस आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आज का जो ये वीडियो है, दिस इज अबाउट करियर स्कोप इन क्लिनिकल रिसर्च। एंड इसके लिए हमारे साथ है आज के गेस्ट मिस शिवानी सरदारा मैम। एंड ये अभी एज ए क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट वर्क कर रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छे से बता सकते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च क्या होता है, इसमें कैसे काम किया जाता है। तो विदाउट मच डिले, लेट अस वेलकम आवर टुडेज गेस्ट मिस शिवानी सरदारा मैम। So ma'am, I would request you to first introduce yourself कि आपने कहाँ से अपनी बी फार्म किया, एम फार्म किया एंड सारा एजुकेशन, एंड उसके बाद की जो आपकी वर्किंग जर्नी है वो कैसी रही। Okay, so the thing is that I did my B Pharma. I started in 2014. I did it from CV Gajera Mahila Pharmacy College from Amreli, which is basically district of the Gujarat. And then I pursued my master's from 2018 and completed in 2020 only. I did it from Babar Institute of Pharmacy, which is in Vadodara, one of the district of the Gujarat. And after that, the thing was that in my time, it was 2020, so pandemic was going on. And everybody was searching for a job and nobody had a job in hand. So luckily, somehow before my result, I got a job. I worked as a full-time lecturer in ITM University, Baroda. So there I was a full-time lecturer for pharmacology and human anatomy physiology. So I used to teach students over there. I worked there for a while. I've done my master's in pharmacology actually. So I worked there for a while, and the thing was my area of interest was research. But back when nobody was getting jobs, so even I thought, let's explore the area where I want to go, and I had this thought of pursuing PhD as well. So I went through that, and I thought, okay, now my forte is research. So I started searching for research and everything. But the thing is, when you don't know anything about research, you get into anything which you have in your hand. So I started working as a CRC in one of the SMO in Vadodara, and after that, I worked there for like 6 months and a bit. And after that, I joined Axis Clinicals. So I work in Axis Clinicals Ahmedabad days. So this is how I started. And luckily, like I'll again say, luckily I got the opportunity in very short span of time, being people of the company, very understanding about education and everything, because normally people are having that impression that you'll have to have something from clinical research, but thankfully nobody questioned that in my time. That's great, ma'am. Ma'am, I want to know that, actually my audience want to know that what is the clinical research, means what this stream is all about and what exactly the work you have to do in this field. So basically, बी फार्मा में शायद आपने ये पढ़ा होगा कि एक मॉलिक्यूल को डिस्कवर करना एंड एवरीथिंग, लाइक अभी लोगों के माइंड में यही है कि if you are searching a new molecule, then only it's a research. No, research is basically if there is a molecule, even if it's existing molecule, and say suppose you are using it for a headache, but it is somehow giving the effect on your stomach ache. Okay, somehow it is giving effect. So, and you got to get to know that, and after that you try to search on that. Okay, is it working it or not? So it's not basically just discovering new molecule, but also discovering whether its safety, efficacy is something of what we want. So in clinical research, what we do is, if there is a molecule, we'll check if it's safe to use, if it is effective enough for either diagnosis or treatment or prevention or the regimen, total regimen. So it can be for wide range of things, but not just limited to discovering a new molecule or a particle. It's not about that. Then clinical research will be testing if it works on human or not, how safe it is. So that's what we deal with. Like phase 3 trials, phase 2 and phase 3 trials. Yeah. So again, yeah, I want to tell you a brief about that. It is that trial basically works in 4 phases.
0, 1, 2, 3. Okay, so in zero phase, normally before zero phase, if you have came across preclinical studies, so normally we start from cellular level, then we come to animal, and after animal, what happens is, you go to higher range of animal like monkeys and chimps. Okay, so after that, if it's safe and being effective, okay, so then we come to humans. So in say suppose phase 1 trial is there, or phase 0 is normally pivotal studies. Phase 1 trial is there, right? So in that, what we'll do is we'll try on a very small population, human population, okay, 0 to 20 human beings, just to check that it's safe. So normally what we do is we convert animal dose to human dose, and then we try just for the safety, if it's safe or not. If it is safe, then we move to second phase. In second phase, we go from 20 to 100 people. Okay, so depending on the safety of molecule as well. So it gives the efficacy. Phase 2 is for efficacy. Then we go to phase 3, and that is for safety and efficacy both, because when we get a wide range of population, and that is not only from one region. Say suppose you are doing research, so it will be getting done in Gujarat, Maharashtra, Calcutta, and other part of the India, as well as other part of the globe. Okay, if it's a global study, it will be done in other part of globe as well. So the race is different, people are different. Okay, so their genetic material is basically different. So it is for safety and efficacy both, that is it working in this race. Sometimes some drugs might work on African people and might not work for Asian people, and some drugs can, it can be vice versa. Some drugs can show some adverse reaction in some race of people or some group of people, but not in some. Okay, so that is how we need to check by doing it in a different part of the globe. And this is what happens in third phase. After third phase, it goes under trial. It goes under observation, that what was the data. Okay, so regulatory authorities are there, FDA, European, EU. Okay, so they all go through, checking of the data, that whether it was legible data, whether it was a true data, or did something went wrong, what went wrong, how it went wrong. So they'll go under every bits and pieces, and then they'll decide whether to allow any drug to be used or not. If they allow it, it goes and use it. Okay, so now say suppose we are using any molecule. Basically in pharma, there's a given example of paracetamol, right? So you've been using paracetamol since long time, and there's no side effects, right? But who knows, there were side effects, but nobody knew. Okay, it can happen, but it doesn't happen. Why? Because pharmacovigilance department works on that. What they do is, after marketing, they check for that drug, that for a period of for a period of 5 years, 10 years, they are checking if that is giving any sort of adverse reaction. When a new molecule is being passed, they'll check it extensively for a 1 year and 2 years, that any data or any red flags are being generated or not. Red flags, it means in pharmacovigilance department, there is this area where if there is a particular problem coming out of particular region which is using this drug, so that is called red flag. Okay, so when the flag is generated, so because of that, they'll check what problems are coming, why it is coming, and they'll sometimes you might have heard that some company withdrawn their drug from the market. That is because they found some mistakes, or they found some adverse reaction happening, and they wanted to correct that. All right, so this is the basic 4 step of the clinical research. Okay, ma'am. Ma'am, what are the different types of clinical research? In type, generally I would say, actually, in type there is different typography, in terms के एक आप type कर सकते हो cohort studies, observational studies, uh, interventional studies, but that will not go into that, because it will not be integral part of this discussion. Another thing I'll tell you is, basically clinical research mein, one will be BAB study, and one will be this core clinical research. BAB study will focus on bioequivalence of the particular molecule. It means, आपने सुना ही होगा कि pharmacokinetic and pharmacodynamics, right? So in clinical research, we are dealing with dynamics mostly, majorly, and in the BAB study, they are dealing with pharmacokinetics.
So they'll go and check about the concentration or the rate of elimination. Again, they'll also evaluate if there is a side effect or not. But the main focus will be how the drug is going through the blood, or how it is passing, where it is passing from, and what the concentration is. So, and you might have heard about the ANOVA. So it is basically checked from that, and on the basis of that, the drug is being passed. So it is very, I can say, very different than total clinical research. But yeah, it also deals with human. But the main major difference is, in BAB, we'll be taking up subjects who is healthy. It means they'll not have any particular disease or something. But in our cases, in clinical research, we'll be taking people who we actually want to resolve problem of. Say suppose अगर मेरी medicine है which I want to try is dealing with diabetes. Okay, so I'll take patients of diabetes and then try to check if it is resolving their issues or not. So this is how it is mainly differing. Okay, that means you work mostly on patients. Yeah. Okay. That's great, ma'am. So next question I have for you, that like what are the different kind of designations are available for a pharma person in clinical research, and what are the kind Yeah. of job they have to do? Yeah. So basically, I started with CRC. Okay. So this is how it works. First of all, if you have done your B Pharma, so you can start with CRC. If you have done your M Pharma, you can start with CTA and CRA as well, because some companies are taking freshers, M Pharm people for CRA role and CTA role. Okay. CRC is Clinical Research Coordinator. What they do is they work on site level. It means जैसे एक सीआरओ है, सीआरओ मींस क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करते हैं कि कोई भी एक साइट चूज करते हैं, साइट मींस हॉस्पिटल, जो लोग वहां पे क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। नॉर्मली जैसे आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखो, कोई ट्रस्टेड हॉस्पिटल्स देखते हो, तो दे हैव देयर ओन क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट। व्हाट दे डू कि वहां पे पॉपुलेशन भी ज्यादा होती है लोगों की, तो वहां से उनको पेशेंट्स भी मिल जाते हैं हु अग्रीज फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, तो सीआरओ का काम ये होता है कि वो जाके उस हॉस्पिटल को अप्रोच करेंगे एंड दे विल आस्क के वी वांट दिस इज द मॉलिक्यूल एंड वी वांट टू डू दिस ट्रायल। सो दे विल गो अंडर द एथिकल प्रोसेस जो भी है और डॉक्यूमेंटेशन, एंड उसके बाद दे विल गिव देम अ प्रोटोकॉल कि दिस इज हाउ इट शुड बी डन। तो ये एक हॉस्पिटल की टीम होगी। व्हाट दे विल डू कि वो वहाँ के पेशेंट पॉपुलेशन में से जो भी जिनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, एंड देन जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है प्रोसीजर वो करेंगे। अभी सीआरसी का रोल क्या रहता है, वो साइट पे रहते हैं। ओके, दे आर हायर्ड बाय साइट्स। वहां पे एक टीम होती है जो उनको हायर करती है। तो बेसिकली अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो आई वुड सजेस्ट टू डू सीआरसी रोल फॉर अ वाइल, because you'll know how things work from the scratch. Okay, so what they'll do is, if patient comes in, so they'll be in touch with them कि okay, this is the patient we want to take in trial. So they'll take informed consent form. It means कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज उसमें लिखा होता है सारा, जो भी डिटेल में पेमेंट्स अगर है किसी रिलेटेड, अगर किसी को इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, राइट, बिकॉज इट इज अ ट्रायल, सो इफ समथिंग गोज रॉन्ग तो द पर्सन शुड हैव द कॉम्पेंसेशन। तो दैट इज रिटन अंडर द आईसीएफ लेना, उस पेशेंट की डिटेल कलेक्ट करना, उनको प्रॉपर प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग प्रोसीजर फॉलो करवाना। इट मीन्स अगर ऐसा है कि आते ही उनका वाइटल लिया जा रहा है तो रिकॉर्ड करके कहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर सीआरओ के या तो स्पॉन्सर्स के थ्रू आता है। स्पॉन्सर्स मीन्स कि जिस कंपनी का मॉलिक्यूल होता है, सीआरओ मीन्स हम है थर्ड पार्टी, उनका मॉलिक्यूल है, हम थर्ड पार्टी है, तो हम क्या करते हैं, हम मेक श्योर करते हैं कि इनका जो भी प्रोटोकॉल है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रायल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही करवाना है। दिस इज आवर रोल एज अ सीआरओ। ठीक है, तो व्हेन वी गो टू साइट, तो हमारा क्या रहता है कि हम वी अप्रोच टू साइट, वहां पे सीआरसीज रहते हैं। तो सीआरसीज का ये रोल है सारा कि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग सारा प्रोसीजर करवाना, वेदर इट इज रिलेटेड टू पेशेंट, फिर उनके रिपोर्ट्स, उनके ब्लड सैंपल्स हैं, ठीक है, तो ब्लड सैंपल्स विड्रॉ कराना, उनको टेस्टिंग के लिए भेजना, जैसे हमने बोला है कि टेस्टिंग के लिए भेजना है, जिस कंडीशन में भेजना है, लेबल करके या जिस तरीके से। तो ये रोल है सीआरसी का। आफ्टर दैट अगर रिपोर्ट्स आए तो उनको चेक करवाना, उनसे साइन करवाना, डॉक्टर्स से साइन करवाना, फिर उनको डॉक्यूमेंट करना, प्रॉपर्ली अरेंज करना,
और अगर इथिकल कोई डॉक्यूमेंट्स है, एथिक्स कमिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं, रेगुलेटरी और कोई डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको प्रॉपर्ली फाइल करना, ये सारा रोल सीआरसी का रहता है। अप अंटिल कि ट्रायल स्टार्ट होने से लेके ट्रायल के क्लोज होने तक। कुछ कुछ ट्रायल्स होते हैं जो चलते हैं 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर। तो दिस इज द रोल ऑफ सीआरसी कि अगर आपको एक ट्रायल के लिए असाइन किया गया है तो आप उस ट्रायल के स्टार्टिंग से लेके एंड तक के प्रोसीजर देखोगे। इट डिपेंड्स ऑन द साइट एज वेल। कुछ साइट के क्या क्या प्रैक्टिस है। अगर एक साइट पे ऐसा है कि एक सीआरसी को कोई एक ट्रायल हैंडल करने दिया जाता है, किसी को 2 ट्रायल दिए जाते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन दैट आप साइट पे काम कर रहे हो तो यू आर अ सीआरसी, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर। तो आप अगर वहां पे काम करते हो तो आपको बेसिकली कहाँ से क्या क्या चीजें होती है वो आपको पता चलता है। फिर आते हैं सीटीए। सीटीए होते हैं सीआरओज में, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, सीटीए का काम ये होता है कि से सपोज सीआरएज हैं जो, वो साइट पे जाते हैं, वो वहाँ की जो भी टीम है उनको ट्रेन करते हैं, और उसके सिवा डॉक्यूमेंटेशन है, काफी कुछ चीजें जो उनको प्रोवाइड करनी है हमें बीइंग अ सीआरओ, तो वो सारा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना, जैसे कि कोई आईसीएफ वगैरह है कि किसी अभी देखो गुजरात है अगर, तो गुजरात में लोग कौन सी लैंग्वेज जानते हैं, गुजराती जानते हैं। बट कुछ पॉपुलेशन है जो हिंदी भी जानती होगी, कुछ पॉपुलेशन इंग्लिश भी जानती होगी। सेम वी गो टू महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ मराठी नोइंग पीपल ही हो, ठीक है। कुछ हॉस्पिटल्स पे आते हैं मल्टी बाइलिंगुअल पीपल, मल्टीलैंग्वेज पीपल, ओके। तो उनके लिए एक साइट स्पेसिफिक आईसीएफ भी होता है कि इनको इस लैंग्वेज का आईसीएफ चाहिए। तो ये आईसीएफ कहाँ पे किस लैंग्वेज का चाहिए है, कहाँ पे कितने आईसीएफ चाहिए, तो एक एक फॉर्मेट रहता है कि इतने आईसीएफ उनको देने हैं, इतने सोर्स डॉक्यूमेंट्स इनको देने हैं, इतने एथिक्स कमेटी के डॉक्यूमेंट्स इनको देने हैं, डोजियर्स देने हैं। तो ये सारे डोजियर्स जो है वो प्रिपेयर करना, उनको भेजना, उनका ट्रैक रखना, ओके। इफ इट्स नॉट देयर तो व्हाट वेंट रॉन्ग, ये भी एक सीटीए का रोल रहता है। सो बेसिकली जो सीआरएस हैं उनको हेल्प आउट करने का, कोई साइट को इनिशिएट करने में हेल्प आउट करने का रोल सीटीए का रहता है, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ सीआरओ। because if being a CRA, if I am going for going to meet up a site or initiate a site, I'll need all those materials, all training materials, all the sources and ICFs and annotations for understanding of the other team. तो उसको हेल्प आउट करने का काम सीटीए का रहता है। तो इफ यू बिकम अ सीटीए, you can be B Pharma and M Pharma and join the CTA, directly apply for that। freshers CTA जो है वो कंपनी हायर करती है, they don't need much experience, and the best part about having done B Pharma and M Pharma is that only you don't need any extra qualification to be in clinical research, okay। and if apart from CTA, that then comes CRA, ठीक है। CRA का रोल ये रहता है कि साइट को सिलेक्ट करना फर्स्ट ऑफ ऑल, कि जैसे मुझे कोई असाइन किया गया है एक ट्रायल, राइट। तो अगर साइट्स अवेलेबल है प्री एग्जिस्टिंग, हमने कोई हमारी कंपनी ने कोई चूज करके रखी है तो ठीक है। बट अदर देन दैट, इफ आई एम फीलिंग के फॉर अ रिक्रूटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट्स, कोई एक डॉक्टर है जिनके पास वो पेशेंट पॉपुलेशन ज्यादा है, तो आई कैन सजेस्ट के दिस साइट कैन बी गुड, ठीक है। तो एंड देन एक क्वालिफिकेशन चेक होता है उस साइट का, वहां जाते हैं, उनसे मिलते हैं, एंड देन वो चेक होता है कि डू दे हैव इनफ फैसिलिटी, डू दे हैव इनफ टीम मेंबर, डू दे हैव कैपेबिलिटी टू कोप अप विद द प्रोटोकॉल, जो भी हम उनको प्रोसेस करवाने के लिए बोल रहे हैं, कैन दे डू दैट। तो वी चेक दैट। तो एक क्वालिफिकेशन करना, इफ क्वालिफाई हो रही है साइट तो उसको इनिशिएट करना, क्योंकि इनिशिएट करने में बहुत सारी चीजें लगती है। एथिक्स कमिटी एक है जो मेन रोल है उनका, तो एथिक्स कमिटी से अप्रूवल लेने से लेके उनके टीम मेंबर्स की डिटेल्स लेना, उनको ट्रेन करना, फिर उनको सप्लाईज पहुंचाना। मतलब अगर हम किसी से ट्रायल करवा रहे हैं, ठीक है, तो साइट इनिशिएट करने से पहले उनके पास सफिशिएंट सप्लाईज होनी चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं कि उनको ब्लड टेस्ट कराने हैं सब्जेक्ट्स के, तो हमारे यहाँ से वायल्स उनको पहुंचनी चाहिए, हमारे यहाँ से ड्रग्स उनको, आईपी तो बाद में जाती है एसआईवी के बाद में, बट उससे पहले इंस्ट्रूमेंट्स अगर कोई चाहिए है, जैसे कोई सर्टिफिकेशन करवाना है, तो ऑल दैट शुड बी देयर बिफोर दी एसआईवी। डोजियर्स उनके पास होने चाहिए, मटेरियल उनके पास होना चाहिए। तो ये सब हम पहले उनको प्रोवाइड करते हैं।
फिर SIV का टाइम आता है। SIV इट मींस साइट इनिशिएशन। साइट इनिशिएशन पे हमारा ये रोल रहता है कि हमने जो भी मटेरियल उनको प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, तो विल टीच देम हाउ टू यूज इट। इफ वहां पे सिरिंज पंप हमने प्रोवाइड किया, राइट, तो विल टीच देम हाउ टू यूज इट, व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम विच मे कम अक्रॉस एंड हाउ टू रिजॉल्व देम। तो ये CRA का रोल रहता है, ठीक है। तो एंड मेक श्योर कि एवरी टीम मेंबर हैज अ रोल असाइंड एंड दे आर द ओनली वन परफॉर्मिंग देम। अगर मैंने कोई किसी को अगर वहां पे मैंने देखा है कि कोई टीम मेंबर फार्मासिस्ट का रोल कर रहा है, तो फार्मासिस्ट का रोल विल बी टू डिस्पेंस द मेडिसिन। ओके, तो मैं ये मेक श्योर करूंगी कि वहां मेडिसिन वही इंसान डिस्पेंस कर रहा है, ठीक है, एंड ऑल द डॉक्यूमेंटेशन जो भी हो रहा है विच इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू GDP। ओके, GDP इज व्हाट वी फॉलो फॉर द ट्रायल। तो वो देखने का काम CRA का रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइट के सारी फैसिलिटीज जो है उनका चेक रखना। चेक इट मींस अगर वहां पे कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो कैलिब्रेटेड है कि नहीं है, अगर है तो उनका कैलिब्रेशन कब एक्सपायर हो रहा है, वो हमें ध्यान रखना है कि वो मेंटेन करे। फिर अगर कोई इंसान है, टीम मेंबर जो जा रहा है, तो उनके रिप्लेसमेंट में कौन आ रहा है, कौन किसको डेजिंग को टास्क किसको वो दिया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, वो मेक श्योर करना। फिर जो सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अभी एक टाइम के बाद, इनिशिएशन के बाद सब्जेक्ट्स एनरोल होना चालू करते हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट्स देखना कि अगर सब्जेक्ट इन लोगों ने इनरोल किया है तो ICF है कि नहीं है, उसमें डिटेल्स प्रॉपर्ली है कि नहीं है। फिर उनके जो भी वाइटल्स है, फिजिकल पैरामीटर्स है, जो भी उन लोगों ने मेजरमेंट किए हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू वी कैन से लिमिट है कि नहीं है। कभी कभी चेक करना रहता है, राइट। मान लीजिए कि किसी ने लिखा हुआ है कि वन सब्जेक्ट हैड अ टेम्परेचर ऑफ 102 Fahrenheit, बट इफ दैट इज रिकॉर्डेड एज अ नॉर्मल, तो विल हैव टू टेल देम कि इट्स नॉट नॉर्मल, राइट। अगर मिस्टेक्स ऐसा हुआ है तो वो मिस्टेक्स मेक श्योर करना कि उनकी मिस्टेक्स फाइंड करना एंड देन उनसे करेक्ट करवाना कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम। शायद उनसे गलती से लिख गया होगा कि इट वाज नॉर्मल, राइट, तो उनसे वो करेक्ट करवाना, ये हमारा रोल रहता है। फिर उनसे टाइम पे डॉक्यूमेंटेशन करवाना। जब अभी ऐसा होता है कि एक टाइम पे उन लोगों ने एक साथ 5 सब्जेक्ट एनरोल कर लिए, ठीक है, तो उनका जो भी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक्टिविटी है वो तो लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट उनकी और भी एक रोल है विच इज कि जो वो लोग कर रहे हैं वो लोग उनको डॉक्यूमेंट भी करें। तो वो भी हमारा रोल है कि उन लोगों ने अगर एक साथ इतने लोगों को एनरोल किया है तो साथ साथ में उनको वो डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। अपार्ट फ्रॉम डॉक्यूमेंटेशन एक आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा, ठीक है, EDC। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा में क्या होता है कि वी गिव देम ID एंड पासवर्ड एंड देयर इज दिस सॉफ्टवेयर which has the blanks, boxes of the for different parameters कि यहाँ पे टेम्परेचर लिखना है, यहाँ पे हाइट लिखनी है, वेट लिखना है, तो उसमें सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन हम पुट इन करते हैं। तो ये रोल रहता है टीम का। जो साइट है उनका ये रोल रहता है कि वो सोर्स डॉक्यूमेंट्स भी भरे, जो फिजिकल डॉक्यूमेंट्स है, एंड अगेन इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंफॉर्मेशन शीट है वो भी वो लोग भरे। तो वो CRA का रोल रहता है कि वो सारा मेंटेन करे कि क्या वो लोग ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको बोलना कि आप ये कंप्लीट कर दीजिए, अगर वहां पे मिस्टेक्स है तो वो कंप्लीट करवाना, अगर आपको मिस्टेक्स लग रही है तो वो करेक्ट करवाना, ये उनका रोल है CRA का। फिर अपार्ट फ्रॉम दैट वहां पे कोई सप्लाईज नहीं है, एक टाइम के बाद उनके हमने जो टेस्ट मॉलिक्यूल उनको दिया गया था, ठीक है, टेस्ट एंड रेफरेंस मॉलिक्यूल हम उनको देते हैं, तो एक टाइम के बाद अगर वहां से खत्म हो जा रहे हैं IPs, तो वो फिर से ऑर्डर करना, मतलब डिस्पेंस करवाना, हमारे जहां से भी हम लोग भेजते हैं तो वो करवाना, उनके मेक श्योर करना कि उनके रिपोर्ट्स टाइम पे आ रहे हैं कि नहीं है। अगर रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रहे तो वो भी उन जिनको भी प्रॉब्लम हमें रिजॉल्व करवाना है तो वहां से रिजॉल्व करवाना। प्लस इनके सैंपल्स अगर साइट से जा रहे हैं तो साइट से टाइम पे सैंपल्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, लोग वहां से पिकअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो हमें भी ये रिजॉल्व करना रहता है। तो वी आर द we can say a communicator between team and CRO and a sponsor as well, because sometimes sponsor will also ask if what your site is doing, what's the status of your site, so we'll have to answer them as well. So basically majorly it happens that you will be kind of a postman for the the CRO and the team, because you make sure that everybody stays in communication, everybody knows and everything which is going around in the site. तो ये CRA का रोल रहता है। ये सारा साइट का जो है वो अलग एक है
एंड हमारे सीआरओ पे हमारा सीआरएस का क्या रोल है कि हम जब साइट विजिट कर रहे हैं तो हमारे सीआरओ में एक रिपोर्ट जनरेट करना कि वी विजिटेड द साइट, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ साइट, मतलब कितने सब्जेक्ट्स एनरोल हुए हैं, उनका स्टेटस क्या है, कुछ एडवर्स रिएक्शन है कि नहीं है, तो अगर एडवर्स रिएक्शन है तो आपने फाइल करवाया कि नहीं करवाया, किस वजह से एडवर्स रिएक्शन हुआ था, कितना सीवियरिटी का एडवर्स रिएक्शन था। तो ये भी हमारा रोल है कि अगर हमारे साइड पे कोई सब्जेक्ट को कुछ हुआ तो हमें मेक श्योर करना है कि उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर्ली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इज द सब्जेक्ट फाइन और नॉट, इफ नॉट व्हाट कैन बी डन, व्हाट शुड बी डन। वो हमारे मेडिकल मॉनिटर हमें गाइड करते हैं उस तरीके से, बट ये हमारा रोल रहता है कि हमारे साइड पे कोई सब्जेक्ट है उसको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है तो विल हैव टू स्टे देयर फॉर द कम्युनिकेशन। ओके, तो हमारे सीआरओ पे भी हमें अपडेट करना रहता है कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, इज एवरीथिंग फाइन और नॉट, इफ नॉट व्हाट वेंट रॉन्ग, हाउ इट वेंट रॉन्ग, so that is documented in a report. So we'll have to make a report, okay, if we visited the site, this was the status. So it is a timely report which we need to generate because we go to site on a timely manner. एक टाइम फ्रेम होता है कि इतने सब्जेक्ट्स एनरोलमेंट के बाद या तो इतने टाइम फ्रेम के बाद you'll have to visit a site. So if I am going to a site in a every once in a 2 month, so I'll go there again, check the status and compare between two रिपोर्ट कि अच्छा पहले ये मिस्टेक्स थी, करेक्ट हुई कि नहीं, बिकॉज मैं एक बार साइट पे जाके आ गई एंड देन आई विल चेक कि अच्छा यहाँ पे मिस्टेक्स है, ये करेक्ट करनी है, तो एक टाइम फ्रेम में मैं करेक्ट करवा दूंगी, फिर मैं जाऊंगी नेक्स्ट टाइम तो मैं देखूंगी कि अच्छा ये मिस्टेक्स मैंने बोली थी वो करेक्ट हुई है कि नहीं है, अगर नहीं हुए तो उसको इमीडिएटली कराना पड़ेगा बिकॉज यू नो इट कैन नॉट स्टे देयर फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये सारा रोल है सीआरए का। एंड सीआरए आप एज अ फ्रेशर, एम फार्म फ्रेशर हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिकॉज देयर आर कंपनीज व्हिच इज hiring M Pharm freshers for CRA role. And if you are a B Pharm graduate, that is no problem. You can go from CTA or CRC and then you can have experience and then you can become a CRA. Okay, ma'am. That's great to listen all the roles that pharma person can perform. So actually, I forgot to mention the one role which was of a QA. So what is the basic role of QA is to make sure that whatever we got them documented or whatever information हमने जो चेक की है, हमने जो डॉक्यूमेंट की है, which is correct, मतलब it's kind of a double check for the information. जो भी साइट पे हुआ, we checked it, and if we made any mistake during the checking or not. So that is the role of QA in the clinical research. You can also join as a fresher QA in that. So you can directly go whether you are B Pharm, M Pharm graduate. There is also one of the scope for a third party QA monitors. इनका रोल क्या रहता है? Normally regulatory requires कि अगर आप मेरा CRO है, right? तो मेरी सीआरओ की टीम कहीं से ट्रायल करवा रही है, तो मेरे सीआरओ के सीआरएस ही जाएंगे कुछ चेक करने के लिए। ओके, अगर मेरे ही सीआरओ की टीम है जो क्यूए टीम है, अगर वो कहीं पे जा रही है चेक करने के लिए, तो यू नो देयर कैन बी अ बायस कि दिस इज फ्रॉम आवर टीम, हमने चेक किया है, से सपोज मैं किसी को जानती हूँ, ओके, सो दैट पर्सन विल बी लाइक कि इन्होंने चेक किया, इट विल बी गुड, एंड दैट कैन बी, देयर कैन बी अ बायस, ओके, so we don't want to have any bias when it comes to research. So what they require is if there is a third party or third organization who have the QA team, so what they'll do is they don't know me, they don't know who did the checking, who did the CRA work, right? So they'll go directly and they'll check whether the CRA did the right work or not, or whether team did any mistake or not. So their role is also to check and mention the mistakes which is there. It can be from sponsor as well. Sponsor can also hire a direct third party QA monitors, and they can directly go and check that if the things are going according to protocol or not. Okay, ma'am. So, if we want to summarize the whole roles that you have mentioned, then we can say that mostly जो patient related work है, जो direct patient के contact में आने वाला जो work है, that is performed by CRCs, right? Yes. Yes. Yeah, and जो mostly documentation work है, that will be performed mostly by the CRAs or the CTEs. CRCs and CREs both, majorly from CRCs only because they are in direct contact with subjects.
So they know the information, so they will be transcribing that information to source document. फिर उस documentation को properly करना, again EDC करना, वो सारा role majorly CRC करता है. CRA का role है major, but it is into checking the document and making sure there is no mistakes. If there are, then correcting them that way. Okay, and ma'am CTA का role? CTA का role CRO में है, मतलब जैसे ही CRC का role साइट पे है, वैसे ही CTA का role यहाँ पे CRO के अंदर है. तो they help the CRAs to prepare for the जो भी साइट के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है, तो उनको प्रिपरेशन करने में CTAs हेल्प करते हैं. ओके, सो जैसे CRC का रोल हॉस्पिटल में ऑन साइट है, वैसे ही जो CTA है उनका रोल ऑफिस में है, जो CRO के ऑफिसेस है. CRAs, yes. Okay, ma'am, got it. So next thing I want to discuss is that like who can go for clinical research kind of jobs. Like I have heard that also some BSc people or MSc people, they also go for clinical research kind of jobs. So and if one want to go for the clinical research job and they have B Pharma degree, so are there any kind of specializations or the like diploma courses available for them so that they can take help of those courses? If you have done B Pharma or M Pharma, you need not to waste any single penny on the other courses. You are well qualified, well equipped for all these roles. Yes, you'll need basic information. Ma'am, as you have already discussed about like how to start, so can we just once again we can go for this question, how to start the career in of course. Yeah, so if you want to go directly into clinical research, you are coming from any field, okay? In any field, in terms of, say, suppose I was in a teaching field, okay, and then I switched to clinical research, all right? So, and you can be in a BAB and can go into direct, clinical research. You can, if you have experience of any kind of, say, suppose you are coming from BAB, right? So you have a bit knowledge and bit experience about how things works in BAB. So you can come into clinical research directly. Depending on the company, they'll assign you a role. Say, suppose some companies assign you direct CRAs because they feel like you are well qualified. So you can do that. If you are a fresher and B Pharm graduate, I would really suggest you go for CTA role or CRC role. If you are M Pharm graduate and fresher, I would suggest CTA and CRA. Directly CRA, going for CRA is not wrong because कुछ लोगों ने advice भी किया होता है कि go for CTA and then for CRA, but some companies are hiring for CRAs directly, so go for that. But yeah, I would mention that if you are M-Pharm pharmacology graduate, it is more helpful for you to get a direct CRA job as a fresher. Okay, it won't be easy again because you'll be learning. You are a fresher, right? It won't be easy, but you'll get a job directly from that. Other than that, just be sound about what you are going to do. क्योंकि जो भी आपने पढ़ा होगा उससे चीजें डिफरेंट होंगी और शायद आपने वो सारी चीजें सुनी भी नहीं होंगी जो वहां पे होंगी. ठीक है, तो आप पूछ सकते हो लोगों को जो काम करते हैं वहां पे, एंड यू कैन बी साउंड अबाउट वॉट एवर नॉलेज यू हैव. आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि आप डिटेल में आप सब चीजें जानो, बट आपसे ये एक्सपेक्ट जरूर होगा कि जो आपने पढ़ा है आपके करिकुलम में वो आपको पता है. और आइदर बेसिक थिंग्स व्हिच आई सेड कि जो भी स्टेजेस हैं और क्या क्या रेगुलेटरी अथॉरिटीज कौन कौन सी है, तो ये सब चीजें एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यूज में भी. इट्स नॉट कि पीपल एक्सपेक्ट मच मोर फ्रॉम दैट बिकॉज यू आर फ्रेशर. दैट्स ऑल. You don't need to be worried about it, and especially when you are B Pharm and Pharm graduate, you don't need to worry about anything. You're well qualified and go easily. Just be sound about your knowledge. Okay. Ma'am, next question I want to ask this, like if a student decides that they want to go into clinical research field in the future, then what kind of qualities or what sort of skills they must have, or like what they should like we can say that ki, if I like this thing, I would like to go into this field. If this is my passion or these are my likings and preference, I can go into this field. So मतलब पूछने का बेसिकली ये है कि पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए किसी की कि अगर उनको डिसाइड करना है कि हमको आगे चल के सीआर के फील्ड में जाना है.
First तो interest के you want to be involved in this kind of thing. एक interest होता है लोगों का कि this research happens, how it happens, I want to be part of it first. Second, if you are somebody who has keen eye for the um, details, because of course you'll be finding mistakes, you'll be searching for that and correcting it. Second, if you are a person who can deal with people, because you'll be communicating with site people, doctors, phlebotomists, your own company people, your colleagues, your upper managers. So there will be different kind of people each and every step. So if you are a person who can communicate very well or like to meet new people as well, so you can do that. Another thing, CRAs tend to travel. जो भी CRAs हैं उनका डेस्क जॉब नहीं होता. आपको एक साइट असाइन किया है तो you'll have to go to that site, you'll have to check the document, and not necessarily that site will be in your same city. That can be in a different city, different state. Okay, so depending on that you'll have to travel. So if you are a person who cannot travel, so I would suggest you go for something which is not offering travel. एंड कंपनी टू कंपनी ट्रैवल पॉलिसीज डिफरेंट होती है. कुछ कंपनी रिक्वायर्स कि आप 15 डेज ट्रैवल करो, देन 15 डेज आपका जो भी डेस्क है जॉब है वो करो. कुछ कंपनी रिक्वायर्स के मंथ में 3-4 बार ट्रैवल करे. तो डिपेंडिंग ऑन द कंपनी पॉलिसी आपका ट्रैवल फ्रीक्वेंसी रहता है. तो वन मस्ट बी रेडी टू ट्रैवल ऑफन if they want to join as a CRA. Okay. Ma'am, later I want to talk about like what is the scope, how far an individual can go in the field of CR. If you are a B Farm graduate, if you're a Pharma graduate, you have a huge, I can say, like way of success, being successful in this field, because you can go for any role. I said again, CRA, QA. Okay, so QA has जैसे CRA है, ठीक है, CRA के बाद है manager, and again जो भी further posts है, तो same QA में भी वैसी post है. And if you are a pharma background people, and especially M-Pharm people, they know that you have deep knowledge about medicine and the body and other stuff. Okay, other than the people who are coming from other background, because उनको शायद ह्यूमन बॉडी के बारे में पता हो सकता है, बट नॉट अबाउट मेडिसिन, बिकॉज दे हैव नॉट स्टडीड मेडिसिन. ओके, सो हमारा ज्यादा स्कोप है बीइंग अ फार्मा ग्रेजुएट. अगर आप ज्वाइन कर, आई वुड रियली सजेस्ट एनीबडी टू ज्वाइन इन दिस फील्ड, बिकॉज वी हैव वाइड स्कोप of getting success in this, be it in terms of India, be it in terms of abroad. Abroad में I would want to tell you कि abroad में there is a requirement of you to be in a clinical research background, but not all companies. अगर आप graduate होके जा रहे हैं, आप freshers हैं, तो आपको clinical research का जैसे एक year का course है, तो you can do that and join clinical research. बट अगेन अगर आप किसी कंपनी में यहाँ पे इंडिया में एज अ CRA काम कर रहे हैं, यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ 3-4 years, so you can, there are companies which I have seen, they are hiring people across the globe. They can hire you across the globe for that role as well. You don't need to go through education process and everything. They'll hire you based on your experience because you have done enough. So it has a good scope, and I would tell anybody who want to join that you join it. You don't need to be worried about anything in this. Okay, so ma'am, last question I want to ask you that, do you want to give any suggestion from your side to the students? Yes, only one suggestion is that make sure that your CV is according to the job profile that you are applying for. You should have one good cover letter according to your job profile which you are applying for, and one good CV in good format according to your job profile, and the skill sets should be according to that. If you are going for CRC or CRAs, you will have to have good command over Excel, PPTs, and Word, and all that Microsoft stuff. But don't be like you are going for clinical research and you'll be telling you I have a good GMP.
practice or I have good knowledge of GMP. It is good to have GMP knowledge, but not necessary in this field. You should have GCP and GDP knowledge. Okay, so make your CV in a such a way that a person who sees it wants to go forward with that. Just that. Okay. Means it should be relevant enough Yes, according to this. yes, yes. And if you need any help with that, you can just drop me a text on LinkedIn. So there I'll be available for that as well. Sure, ma'am. Okay, ma'am. So these were all my questions, and thanks a lot for answering all the questions so nicely and so thoroughly. I hope, and I'm damn sure that my audience will get too much benefited with all your answers, because all the things that you have provided are so much insightful and it is too much informative. Like as I have seen many times, like I have recently passed my masters by the month of July, and I remember that we used to get the JDs from various companies, and after reading all the JDs, we were almost blank because we don't know what does this exactly does this mean. So if we have someone who can tell us and who can just give some brief idea, or just can give some light, put some light on this, like what this Yeah. role is about, you have to do exactly, it will be better for us to choose the job. Yes. Otherwise what can happen that after some time we will feel stuck into that job. So Yes. it's great to have the people like you on my channel who are trying to just minimize the gap between academia and the actual job world. So I'm damn sure that it is going to help the student a lot. And also students, if you have any kind of question, you can just drop your questions in the comment section. I will forward all your questions to Shivani ma'am. She will answer it and I will revert back to you. And also again, if you want to have some conversation with the ma'am, you can always you can contact her on LinkedIn. I will provide her LinkedIn profile link into the description. You can contact her also. So with this note, I would like to end the meeting. So thanks a lot, ma'am, once again. And thank you, Welcome. audience, for watching this video. My audience also. Messed up. Okay, ma'am, one more take I will take. Yeah, no problem. Okay.